अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सितम भाई अली और मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। मैं आज हूँ ज़ीशान भाई के साथ। वेलकम ज़ीशान राना। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने जॉइन किया मेरे प्रोग्राम को। कैसे हैं आप? I'm good, Ali. Thank you so much for inviting me over. I think we're late by 10 minutes. I was stuck somewhere, so my due नो वरीज़, apologies. नो वरीज़, Let's नो get वरीज़। started. या ज़ीशान भाई, मैं आपसे पूछा था, आपको पता है अभी सीरीज़ हुई है 3-0 पाकिस्तान जीता व्हाइट वॉश। उसमें पाकिस्तान ने बैटिंग में एंड बॉलिंग में दोनों डिपार्टमेंट में आउट क्लास खेला है। पर आपको लगता नहीं है दिस अ लॉट ऑफ होल्स विद द Indeed. कॉम्बिनेशंस? बिकॉज़ आपको लगता नहीं है अब मुझे एक बात समझ नहीं आती दिशा में, अब शादाब नवाज़ की जगह कैसे बनती है टीम में? और बाबर को भी जस्ट किया हुआ है, ठीक है? और आपको Mhm. क्या लगता है इस बारे में, क्या राय है आपकी? Actually, I'll take this selections fiasco back to the Champions Trophy. We had one Yeah, player injured. His name was Saim Ayub. Before the Champions Trophy, he broke yeah, his ankle. So उसमें हुआ ये था. In fact, he broke his shin. तो उसके बाद एक बैटर के ना होने की वजह से दे हैड टू चेंज द एंटायर टीम. दे ब्रॉट इन खुशल शाह फ्रॉम नोवेयर, फहीम अशरफ फ्रॉम नोवेयर, नवाज फ्रॉम नोवेयर एंड अ कपल ऑफ अदर बॉयज. सो एक बंदा जाता तो पाकिस्तान टीम में जो है ना, इट इज अ मेहम. सो इट चेंज द एंटायर कम्प्लेक्शन ऑफ द स्क्वाड. द सेम थिंग हैपेंड दिस टाइम अराउंड. आई मीन के आपने शादाब को, ही वाज अ चैंपियन बॉलर, but he was mhm, champion bowler from 2017 till 2021 at the max. उसके बाद he was merely playing on his repute. होता ये कि once you don't perform in the national squad, you go back to the domestics. You perform in domestic. You are the last one in the queue. You perform for a season or a couple of seasons, then you make into the ranks of A team. A yeah, team serves as the bench of any national side. But हमारी कोई A team है ही नहीं. हमारी कोई एज ग्रुप की क्रिकेट इधर होती ही नहीं है. अंडर 19 के आपके टूर्नामेंट्स डोमेस्टिक खत्म हुए में रुक गए थे. फिर यू हैव स्टॉप्ड दैट दोज 3 डे द मैचेस जिससे कि प्लेयर बनता है. प्लेयर की कंसिस्टेंसी परसिवियरेंस का आपको आइडिया होता है. सो दोज थिंग्स वर जस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. तो शादाब आउट ऑफ नोवेयर आया. आपने बाबर को टीम से निकाला, राइटली सो निकाला. ही वाज नॉट कट आउट फॉर T20. शादाब, माइंड यू, व्हेन he was asked, when he was dropped from the team, he was mainly bowling. He was known as a right arm full toss, not a leg spinner, but he was just sending us full toss deliveries. और अगर आपका क्राइटेरिया बंदे को रखने का टीम में लीग क्रिकेट है, which is known as club cricket in Australia or in England, जहां पर खेली जाती है, these are clubs. These franchises are actually clubs. So Somerset is a club. So KKR is a club. So any franchise is a club. So how can you draw a parallel between a club and an international level? There are two different things that we're discussing. So Shadab galat aaya, but Shadab proved everyone wrong. May it be one time wonder or whatever, but he performed outstandingly. और उसने पिंच हिटिंग की और उसने पिंच हिटिंग करके आपको एक थर्ड मैच जितवाया. So is the case with Nawaz. Nawaz got away with 5 wickets haul. अब आप ये कहेंगे स्पिनिंग विकेट्स थी, बट एक्चुअली बाबर की 50 आपने देखी. 50 में कोई एलिमेंट नजर नहीं आया. शादाब की नहीं आपको नजर आया. नवाज की इंक्लूजन है आपको टीम में और लेग्स दी. बट फहीम अशरफ इन दिस स्क्वाड मुझे नहीं समझ आ रही है आपने इसको इसी भी स्क्वाड में क्यों भी रखा हुआ. आप जरा एजुकेटेड जो बोर्ड्स है ना, जिनके पास स्ट्रक्चर अच्छा है, आप उनको देखिए. अगर एजाज पटेल न्यूजीलैंड का प्लेयर है, ही डजंट प्ले इन न्यूजीलैंड, ही ओनली प्लेज इन सब कॉन्टिनेंट. वो एक अपना मैच खेला न्यूजीलैंड में, टेस्ट मैच. बाकी सारे मैचेस वो इस नेशन में खेलता है. फर्गसन को वो खास ट्रैक्स पे खिलाते हैं. दे डोंट प्ले ऑन एवरी ट्रैक. सो यू हैव द हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस इन एवरी स्क्वाड ऑफ दो सीना कंट्रीज इन इंडिया. इंडिया की T20 टीम बिल्कुल डिफरेंट है ओडीआई टीम से. बट दिस इज हाउ इट गोज. ये पाकिस्तान की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया चलता रहेगा. बट द परफॉर्मेंस वाइज पाकिस्तान आउटप्लेड ऑस्ट्रेलिया इन एवरी एस्पेक्ट. हर मैच में अंडर द 100 उनको आउट करना वाज नथिंग शॉर्ट देन अ मिरेकल फॉर पाकिस्तान. ओके, श्योर, थैंक यू। बड़ा अच्छी राय दी। निशांत भाई, आपसे एक सवाल था। आप देखें सैम यूब ने खेला, चले परफॉर्म कर दिया है, पर आपको लगता है उसके, आपको पता है एशिया कप में उसकी बैटिंग की जरा इश्यूज थे, ही वाजंट परफॉर्मिंग वेल, सो डोंट यू थिंक दे शुड हैव sat him down and give Mas Sadaka a chance in the squad? उसको श्रीलंका सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते, तो फिर उसको वर्ल्ड कप खिलाते. Do you think that would be too much pressure on a like young guy like Maz? Let me just say this to you. In our structure, in our part of the world, the structure says that if you're a senior player, no matter how good your performance is, you still warrant your claim to the slot in the team based on your past performances. Cricket is a sport, a very competitive sport where your current form matters a lot. However, once we all see somebody like Samir Arafat,
and Yasser Arafat, or those guns, Ali Raza, and the boys who were performing from the under 19 level, and those who played the Rising Stars Asia Cup. We don't understand the fact that for Mas Sadakat or for a Muhammad Naeem or for an Ali Raza or Farhan Masood or these young boys, they have to spend at least 2 more seasons in the grind of domestic cricket. Unless and until you give respect to the domestic cricket, where you are made to play those ODI one-day matches, then T20 matches, and then 3-day match. The irony in our structure in cricket, in domestic cricket, is you know how much you get paid for a 3-day match? How much? All right, let me just give you an example. If you get paid by like 200,000 rupees, which is quite a lot of money, I'm not sure even those poor chaps will be paid this much. Maybe 150 grand PKR, and for a D20 you pay them 80 grand. So which job would you like to take? Getting 80 grand in 4 hours, or getting 150 grand in 24 hours? Obviously, you're going to go for the quick wins, quick bucks. So you have to upscale the 3-day cricket, because in 3-day cricket you tend to have the feeling of a one-day match, a T20 match, and a test match. That is where your resilience comes in, capacity is built, and stuff like that. उसमें होता ये है अली कि अगर आप अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हो, डोमेस्टिक को सपोर्ट करते हो, डोमेस्टिक को कैसे रिस्पेक्ट दोगे? लड़का ड्रॉप करा है, उसको वापस ले डोमेस्टिक में, पुश हिम बैक टू डोमेस्टिक. डोमेस्टिक खेलना आसान नहीं होना चाहिए. हमारे रीजन्स ने in cohesion, in fact in connivance with the cricket board, वो क्या करते हैं, अपने रीजन से लड़के recommend कर देते हैं for a particular year. Once the region recommends few players to represent their region, you cannot change that squad. उसमें होता क्या, जो लड़का ज़्यादा खिदमत करता है वो टियर 3 सिटी में, 2 सिटी में, वो चौधरी साहब कहता है आपको थोड़ा बनाता बढ़ाता है, वो नॉन परफॉर्मर भी आपके डोमेस्टिक में आया था. तो इसलिए आपको डोमेस्टिक में वो कैलिबर, वो क्लास नजर नहीं आती, बिकॉज पीपल टेंड टू फाइंड अदर वेज टू गेट द वे इनटू द पाकिस्तान स्क्वाड. दैट इज हाउ इट हैज बीन गोइंग. हालांकि ऑनरेबल चेयरमैन मोहसिन नकवी इज पुटिंग अ वेरी स्ट्रांग फुट फॉरवर्ड फॉर द यंग गन्स, बट you are as good as your team is. So I mean, the team hasn't changed for the last 15 years in PCB, so you can't expect miracles from this team. Yeah, you can expect it. अच्छा, और देखो सोता देखें, इरफान खान नियाजी, अब्दुल समद, राइट? आपको लगता नहीं ये प्लेयर्स हैं जो they could have been key in the middle order, उनको खिलाना चाहिए था. आप लाए हो, आपने इसको ड्रॉप कर दिया दिशां भाई, क्यों? उसके पास पीआर नहीं है, इसलिए आप लोगों ने अब्दुल समद को चांस नहीं दिया. दिशां भाई, आपकी क्या राय है कि अब्दुल समद, इरफान खान नियाजी कहाँ गायब हैं? Where are they? Hassan Nawaz, where is he? Yeah. Very, very nice question. I mean, so far you're concerned with Irfan Khan Niazi. He's the captain, by the way, of your A team. And the captain of the A team is overlooked, and every Tom, Dick, and Harry is still being considered. That is the irony of our system. So when you say your A team serves as the bench for the team, for the national squad, and then you have one guy injured, and then you start looking everywhere like a treasure hunt for the players, instead of a player that is a fast bowler, a spinner, or a one downer, two downer, or middle order batter, you go and search for a spinner. So now what they're doing is turning the batters into bowlers and bowlers into batters. You must understand the fact, if you are a born all-rounder, inbuilt all-rounder, no matter if your bowling goes bad, it doesn't affect your batting. And if you are a batting all-rounder, if your batting doesn't go well, you still bowl without the pressure. But if I'm a batter by default, and then I'm asked and then I don't score runs, and then I'm asked to bowl, my bowling is going to get affected. तो ये वाला मसला तो हमारे साथ रहा हुआ है. अब आपने कहा समद को, Hassan Nawaz ko, they were pre-cooked. They should have spent at least a couple of more years, in fact 3 more years in the domestic circuit, performed, and then made to represent. Yes, with 2 good seasons, you can make your inroads into under 23 in the age group, and then the A team, which is called Shaheens, which is a very funny name to be honest. In fact, every team has an A team. Pakistan has Shaheens. Shaheens is the A team as well as under 23 team. So this is how things roll around in Pakistan. Nice question, but fun. To be frank with you, they still don't deserve to be in the Pakistan team. They can make their slots into the A team, not the Pakistan squad. अच्छा, आपको पता है merging Asia Cup होता अभी I brought another guest on my
channel, and I also asked them, the same question about as आपसे पूछा इरफान खान ऐसी वो कहते हैं इरफान खान ऐसी कि कोई परफॉर्मेंस खास है ही नहीं ऐसा इमर्जिंग एशिया कप में instead of being like a good fielder and he didn't have many runs, right? तो वो बात है। एक उसके बाद आप देखें अभिषेक शर्मा और सलमान आगा कमेंट आया है इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको इतना इम्पैक्टफुल ज़्यादा कौन है? Obviously अभिषेक शर्मा ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, राइट? आगा से। I mean आगा is good, but Uh, obviously अभिषेक शर्मा क्या? what is the question? Abhishek Sharma or Salman Aga? Yeah, Obviously, these are two different players. Please understand the fact Abhishek Sharma is an out and out hitter, clean hitter of the cricket ball. I mean, he is, and he can be anyone's nightmare. That yeah, boy is meant for great things to come. He's like only 24 years of age, fit, yeah, smart, happening, and hitting all across the park. I mean, at times he looks like a golfer. At times he looks like a baseballer. I mean, he looks like an absolute catastrophe in waiting for the bowlers anywhere in the world, any park. Yes, he has some weaknesses which can be exposed, can be exposed. But Salman Aga, no, on his best day possible, he is not even हुँ। 25% of Abhishek Sharma. What Abhishek brings to the table. That's an honest comment. या 100%। अच्छा अच्छा आपसे पूछा था मैंने तुषार भाई के रिगार्डिंग द स्पिन डिपार्टमेंट आपको लगता है नहीं है आई जस्ट मुझे जो लगता है मुझे लगता है सुफियान ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है अबरार से। नो हियर ऑन अबरार में अबरार को बस इट्स नॉट लाइक मैं कोई उसके खिलाफ हूँ या कोई उसकी पर आपको लगता है सुफियान और फैसल अकरम शुड हैव बीन इन द स्क्वाड आपको टेस्ट मैचेस This या this या Yeah, this World Cup is going to shut the doors on quite a lot of senior cricketers. Those who are redundant, those who are not made for international ICC-based events. To be honest, this was a bilateral series. You must understand this bilateral series. In the last 5 6 years, all the teams in the world have started to play their test sides. I mean, the rookies for they're made for people's to players to make their debuts on. तो उसके ऊपर उन्होंने ये किया हुआ है कि जब आप किसी भी बंदे को आप अपनी bilateral में खिलाते हो ना, the pressure isn't that much. Plus, you're playing in the home conditions, so you have the free will to play. Now, these players, may I say, the likes of Nawaz, Fahim Ashraf, call it Samad, call it anyone performing in the Pakistan home conditions, once when they're told that this is an ICC event, then there's more pressure, they tend to crumble under pressure. And the same goes for Shaheen Shah Afridi as well, Haris Rauf. So all these people who have been part of Pakistan squad over the last 7 8 9 years, including Babar as well, they haven't performed as much on the international circuit once when there's an international ICC-based tournament. Yes, the performances have been pretty average or slightly above average in the Asian cups, but ICC matches, no, they haven't performed well. And the reason is right in front of you. When you don't have the horses for the courses, when you do not let the people complete their learning curve and pluck them off, make them a hero for a couple of matches, and then leave them and never talk about them ever again. So, because we don't have pathways, I'm a staunch believer. I've been saying this on the national TVs as well, that if you pick an under 19 kid from Pakistan and a kid from Australia, New Zealand, India, wherever, we don't have much of a difference in terms of capacity. It is only the delta increases once the kid graduates from the age cricket to the big boys league. And the big boys league, since the pathway isn't defined, isn't as methodical as it is in the developed countries. So what happens is the boy doesn't get the opportunities. I mean, you talk about South African A team, Australian A team, you're made to play matches against the respective A teams. इंडिया ए टीम से खेल लेते हैं, साउथ अफ्रीका से खेल लेते हैं, इंग्लैंड से खेल लेते हैं, न्यूजीलैंड से खेल लेते हैं. हम किससे खेलते हैं? हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, डार्विन, वहां के दो जो क्लब्स उनसे मैच खेल लेते हैं, या बांग्लादेश की ए टीम से खेल लेते हैं, या श्रीलंका से खेल लेते हैं. तो आपकी जब ऑपोजिशन ही ऐसी होगी, आपकी उस एज में आप में एबिलिटी कहां से आएगी? आपको अपने ट्रू पोटेंशियल का पता नहीं चलेगा. अच्छा, बिल्कुल ठीक बात की आपने और एक और बात है जैसे आपकी डोमेस्टिक सिस्टम को केयर देनी चाहिए, वो बात होगी। बस ईशा भाई जैसे आई हैव हर्ड बाबर आज़म ने कहा था रमीज़ आज़ा को कि फ्लैट पिचेस बनाएँ। जब पाकिस्तान के सिस्टम जो है वो फ्लैट विकेट्स पे खेलता जाएगा अपने बैटर्स को, सो हाउ विल द बैटर्स इंप्रूव व्हेन दे आर नॉट गोना बी यूज्ड टू बी प्लेइंग इन गुड कंडीशंस लाइक स्पिन, स्विंग, बाउंसी विकेट उनको ये कंडीशंस अब मिलेंगी नहीं, ठीक है? और वो बस फ्लैट पिच में खेलते रहेंगे, वो कैसे इंप्रूव होंगे बैटर्स? वो तो फिर आप ही मार देखो मैं सकते आपको बताता हूँ. छक्के-चौके, आप ही छक्के-चौके मार सकते हैं फ्लैट पिच, राइट? या
मैं आपको बताता हूँ, आयरन इज जब आप हाईवे पिच बनाते हो और तभी आपके बैटर्स नहीं चलते एंड आपके बॉलर्स फेल हो जाते हैं. Listen, Pakistan always thrived on the basis of their fast bowling batteries. Fast bowling battery till 2007 and 8, we still had ample good fast bowlers. I mean, I would say Mohammad Sami was the last of the Mohicans, if I were to say that. An not cut out fast bowler. Uske baad we did have bowlers with genuine zip, every ball 146 clicks and above. Sami was wasted. Akhtar, we all know what he could have achieved, but he didn't because पता नहीं उसके अंदर एक genre में था कि मैंने बस दुनिया में 165 गेंद कर ली तो मैंने दुनिया फतह कर ली है. जब आपके आइडल्स होते हैं ना वसीम वकार जैसे, तो आप आगे जाते हैं. जब आपके आइडल्स बन जाते हैं वो बंदा जिसने 2 प्लॉट लिए हो, इसने एक मार्केट्स रखी हो और उसका जो है ना दुबई में कारोबार हो, फिर आप उनसे क्रिकेट नहीं एक्सपेक्ट करते. आपके लड़कों के गोल्स भी बड़े मीडियोकर हैं. आई ऑलवेज यूज दिस सेंटेंस, इट इज माय पेटेंट सेंटेंस. आई विल जस्ट से दिस टू यू दैट what do you call it? Complacency perpetuates mediocrity. Complacency perpetuates mediocrity. Once you settle at mediocrity ना, तो आपके सामने ये चीजें हो रही होती हैं. लड़कों के गोल्स नहीं है और हमारे बंदों की परफॉर्मेंसेस भी जो है ना उस हिसाब से नीचे आ रही हैं. अब जो यंगर लौट आ रही है ना, ये अली ये जो नए लड़के आ रहे हैं, इनसे मुझे काफी होप है. ये लड़के एथलेटिक भी हैं, फील्ड में जान भी डालते हैं. इनको सिर्फ मेंटोर मिल जाए, अच्छा बॉस ना मिले, इनको मेंटोर मिल जाए. यंग गन्स को मेंटोरिंग चाहिए होती है, बॉस. सैफी यस, सैफी भाई देखिए, सैफी भाई हाँ या नो, सैफी का पता है इशू क्या है? जी सैफी यस, सैफी इज अ गुड मेंटोर, लेकिन सैफी इज टू एनिमेटेड अ पर्सन. वी नीड समबडी हु इज काम, हु अंडरस्टैंड्स व्हाट इट टेक्स टू बी अ यंगस्टर. आप देखें ना, मैम 45 मेरी एज में आके आप हर बात पे वैसे ही ना लड़ना शुरू कर देते हैं इफ यू नॉट वेरी एक्टिव. सो मैं ऑड वन आउट हूं, मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूं, बट मैं अपने साथ के लोगों को देखता हूं, व्हेन एनी इन माय ऑफिस इफ एनी यंगस्टर इज आस्किंग अ क्वेश्चन दे गेट पिस्ड ऑफ. सो व्हेन यू गेट पिस्ड ऑफ एंड यू बॉस हिम अराउंड, भाई उनकी वजह से क्रिकेट हो रही है, उनकी वजह से काम आपको आ रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हमारे लेजेंड्स ने क्या किया. आपके 5 मेंटोर्स आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने वो वेस्ट कोट उन्होंने अपने वो ट्रैक सूट उतारा नहीं, वो सुपरस्टार वाला, वो सुपरस्टारडम मोड से ये बात करते हैं. करंट प्लेयर्स को मेंटोरिंग चाहिए, उनको कोई बड़ा हाथ पैट इन द बैक चाहिए और उनसे परफॉर्मेंसेस आपको चाहिए. Very tough. There's a very thin line between being frank and being mentor, but you have to strike the balance between the two ताकि लड़कों में से आप अच्छा निकाल सकें. बिल्कुल. एक क्वेश्चन आया कि what about action of Usman Tariq? Will he make an impact in the World Cup or not? आपको क्या लगता है? Okay, I mean, we've been swarmed with these questions, to be honest to you, that people have been asking questions of Usman Tariq. You have in your own self made a demon out of that boy. I mean, look at his arm. Listen, let me just tell you guys, I don't think that his action is clean. Just there's a kink in his arm. His arm is tilted, is default tilted. The same way Muralidharan's arm was twisted. Ashwin's action, Harbhajan's action, Shaklan Mushtaq's action, Hafiz's actions, so Shoaib Malik's action, and then you talk about Bumrah's action. Talk about it. Look at from the side. There is a kink. Saeed Ajmal was an out-and-out chucker. So when you have made those players play, there was the only clean action among all these legends was one who's no more, Shane Warne. He was a leggy. Obviously, you can't chuck being a leggy. But then again, I in every off-break bowler, I have found if you are to bowl a drifter, if you bowl the drifter straight one, you have to have a bit of a kink here in your arm. But this boy's arm is locked here. He has some operations here. So I say, if you have deformity, natural deformity, then you shouldn't be in international cricket. But I don't understand the mere idea of why only this boy is being picked at. Okay, you talk about spinners. Was Ashwin not chucking? Was Saklan not chucking? Was Saeed Ajmal not chucking? Was Murali not chucking? Then what is the definition of chucking basically? You look at Bumrah's action. Jasprit Bumrah, he's a flat-out quick bowler. For side-on action, side-on you see there is a bend more than 15 degrees. There's a kink. No one talks about it because he's an Indian cricketer. That's the reason. Such as the level people have come over to, that if somebody's from Australia or England or India, he may be throwing the ball, people won't be bothered. Then I forgot another name, Shabir Ahmed from Khanewal. He was a big-time chucker. Big chucker. And this chucking, Shoaib Akhtar. This chucking trend was started by Shoaib Akhtar because he also had hyperextensions. But if you have hyperextension, you shouldn't be playing in the normal team. You should be playing in a special team. मेरा तो शुरू से आइडिया रहा हुआ. और आपका सवाल है जिशान भाई, जो लासित मलिंगा आता था स्टप करके, तो आपको लगता है was he a chucker or not? वैसे पूछा.
No, he was not a chucker, but that action should not have been allowed in international cricket. Why? I mean, I have played cricket at a very minimal level. I have played for Lahore Mm. Gymkhana. There's a club in Lahore. Lahore Gymkhana club, I used to play for it. I'm a member there, so I used to play as well. So, I mean, you go and see the side screen. With a cricket ball, you need to have a side screen in front of you so that you can have a better visibility of the bowler. Now, if somebody is bowling from here, that means his arm is not only crossing the wickets but also in front of the umpire. Yeah, So yeah. how can you imagine? How can you assess where is he going to throw the ball? Is he going to pitch a short pitcher or is he going to throw the ball upwards? So उसमें Yeah. आपको पता नहीं चलता. तो लो फुल टॉस से बिल्कुल। मार के आप कहते हो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है. हाँ, बिल्कुल, नहीं। जहां अपने आर्म को यहाँ पर लिमिट रखी हुई है, आप यहाँ से नहीं बॉल फेंकते तो यहाँ से भी लिमिट रखें. बिल्कुल। It is simple as that. बिल्कुल, कमेंट आया कि शहजादा फरहान chose Ahmed Shahzad over Sachin and Saeed Anwar. What are your thoughts on this? देखिए बात सुने, साहब फरहान इज अ क्रिकेटर. उसने अपना आइडियल बताया है, बट आपने उसकी पूरी बात सुनी नहीं. देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ. शोएब अख्तर से मुझे ना कभी पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी मुझे एक बात पसंद आई थी. कहते हैं आपका गॉड होगा सचिन, मेरा गॉड नहीं है, मेरा कोई और गॉड होगा क्रिकेटिंग. सो सचिन तेंदुलकर को इनसे मिलाना भी एक गलती है, एक बेवकूफी है. सचिन इज बेटर देन ब्रैडमैन, हायर देन ब्रैडमैन. उससे वो साहब फरहान जो कि 50 स्कोर करके मैच हार के वो AK-47 के इशारे करा, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो कहता है अहमद शहजाद मेरा आइडियल है, बिकॉज क्या पता अहमद शहजाद ने उसकी सिफारिश की हो कभी उसको टीम में खिला लें, तो उसने उसको होमेज पे कर दी. तो उसको इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, आपको लगता ही नहीं है जिशान भाई कि फरहान इज अ गुड प्लेयर पर ही वो बाउंड्री करता है हिट, बट वो बहुत डॉट बॉल्स खेलता है. आपको लगता नहीं दैट कुड बी अ प्रॉब्लम? That is the biggest problem. You're hitting sixes, boundaries, but if you look at his strike rate is 128, it puts an additional pressure on the non-striker. This is what it is. So, Yeah. I mean, he plays with very stiff hands. He doesn't maneuver. So he is an opposition team's delight. He'll hit you out of the park for a couple of balls, then give you a couple of boundaries, and then what? Then chokes the non-striker and loses his wicket. So by the end of 5 overs, you are 52 for the loss of 2 wickets, and then your score run rate starts dropping. Even if he goes out in the 9th over, then score rate drops. और आपको We have very, very minimal roles. We have very, Yeah, sorry to cut you. minimum roles. पता है I'm sorry. minimum roles, right? Please. सॉरी, आपको पता है स्क्वाड में कितने डिससेक्ट करें, कितने मसले हैं. अब देखिए दिशा भाई फखर की टीम में जगह बनती है. आई डोंट थिंक सो ही इज अ T20 player. I think No. in one day he can maybe take his time because you know it's a longer format. T20 is a very short format, right? मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, like street cricket. Like मैं खेलता हूँ Very 5 nice. overs 3 ball, right? तो मैं इधर हिट करता हूँ या मैं आउट होता हूँ. मैं ये डॉट्स बॉल या टुक टुक नहीं करता. अब देखिए बाबर आजम का ये मसला है. उसने लास्ट मैच 50 किया, थर्ड मैच. Don't you think he stat padded himself? He made 50 because he could have played fast. Because शदाब आके मारा है, आफिया आके मारा है. वो किंग है, किंग से क्यों लग रही किशन भाई? First of all, he's by no stretch of imagination anywhere close to the king's courtiers. What to talk of the king? King is not this boy, not this lad, not this team, not this system. If you are to talk about somebody who has achieved it all in all formats, I would say Michael Clark, Ricky Ponting. Then I should say Stephen Waugh. Okay, I can say this about Kevin Peterson, Virat Kohli, Rohit Sharma, and the likes of these things, who have made their impacts on international cricket. Yak Ellis being one. ये है किंग्स. ये किंग्स नहीं है जो हमने बनाए में है. देखिए मेरी बात सुनिए, मैं हैशटैग रन करके ना अपनी टीम अपनी परफॉर्मेंस को मैग्नीफाई नहीं कर सकता. बाबर आजम गाड़ी से उतर रहा है, फोटो. बाबर आजम नेशनल क्रिकेट अकेडमी जा रहा है, फोटो. बाबर आजम जिम कर रहा है. Have you seen the last footage when he took a catch and he fell over? Flat, his shoulders on the ground. Yeah. I'm telling you, I'm 45. My weight is 71 kilos. I run 2 kilometers every day. At this age, just to stay fit. You are an athlete, international cricketer, and you've got your pot sticking out. What is this? Does it anywhere look like an athlete to you? It's embarrassing to see these people. And then they say they're fit for international cricket. Ask him to take 3 triple runs. They'll choke. And ask Virat Kohli to run for 100 singles. That is 37, 38 now, Virat.
and that is how fitness, keeps you going. आपको pressure नहीं आता आप पे आपके जो कहानी भी तो आप पंजाबी ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ आपको ਕੀ लग रहा है कि बहुत ज्यादा निहारी पाए खाने पे की है दिशान साहब ਨਿਹਾਰੀ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਇਹ ਪਰਾਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਾਠੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ but then you have to work out for that as well, you have to burn it, but you are as good as what you eat. if you start eating निहारियां खदे तो फिर आप अखाड़े लड़े, आप क्रिकेट ना खेलें. क्रिकेट बहुत साइंटिफिक और बड़ी एथलेटिक हो गई है. It's never a sport you can play on mere talent. मैं एक पॉडकास्ट देखा था उसमें वो कह रहा था वो रोटी को टच भी नहीं करता विराट कोहली, ओनली उसकी स्पेसिफिक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है लाइक चावल एंड लाइक चिकन but our players are not they don't have that. अच्छा एक क्वेश्चन है, if Pakistan loses the match to Netherlands or USA, will they take the boycott? Pakistan loses a match against the USA? Sorry, I didn't get the question. If Pakistan loses the match to like a USA or Netherlands team like those, do you think they'll take the boycott? The boycott stays. If I endorse it or I don't endorse it, the boycott still stays. The boycott is not going to go anywhere. That's the government's decision. We cannot say much about it. I wanted the cricket to take place, and I have been saying this on many platforms. Had Pakistan been beating India 5-0 over the last 5 matches, and then we would have forfeited the match, it would have suited. We've been losing to India, so this cannot go in as we've given our 2 points to India. No, and those 2 points belong to India. That is how I think about the game of cricket. आप जीत रहे हो, फिर forfeit करो, तभी ना करो, कर दिया सूट करता है यार, हमने 2 पॉइंट्स हैंडीकैप दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया. India is eating every team in lunch, dinner and breakfast. So what do you expect? An extreme, sad and bad day in Indian cricket, T20 cricket, and Pakistan's top-notch day in a T20 cricket. It's only then we can beat India 1 out of every 10 matches or 9 matches. That is where we stand currently in front of India. Mentally, we are choked, and capacity-wise, we're not up there. We can be up there. It will take at least 5 years' time. If we have a roadmap, we can easily beat India. I mean, it's a sport. Someday you lose, someday you win. I've played tennis for 6 years as a junior level in Pakistan. You talk about Virat Kohli's diet. Yes. I'll tell you the diet of Novak Djokovic. Early morning, he takes warm water with lemon, then celery juice, and then juices. And then wild rice, and then the sweet potatoes and boiled potatoes. Can you and I, being Pakistani origin or from South Asian region, can even have that? That takes discipline. That guy is 39 years old. He has beaten everyone, eventually to be beaten by Carlos Alcaraz, who is the new gun in town. So he got beaten in the Australian Open. Yes. वो विराट 15 साल से वो खाने खा रहा है, कहता है मैंने भी डोसे खाने हैं, मैं नहीं खा सकता, क्या करे? रोनाल्डो को देख लें आप. Ronaldo, exactly, yeah. They don't because they have this discipline. Exactly, that's how it is. Because they don't touch this stuff. Okay, good afternoon to both of you. We listened to Dishant sir for a while. He seems like a very racial being. What are your thoughts on a delayed match boycott announcement by PCB? Thank you so much for your comment. Who is this gentleman? What is his name? Shakti Deep Shaktwad. Yeah, Deepji, your question about the boycott. All right. Let me just repeat it again. When the ICC board of there was a board meeting called for the Bangladesh fiasco that they didn't want to be in India, to play in India due to security reasons. Pakistan voted for Bangladesh. I've been saying this on a lot of platforms. Pakistan voted for Bangladesh. It was a 14-2. So the second vote with Bangladesh was Pakistan, and the only vote for Bangladesh was for their own selves. Now, when chips were against Pakistan, when things had turned against Pakistan, did we actually find any support from anywhere? We didn't find any support from no cricket board. So I think the support till that moment, where we had the option of giving a vote, we did that. Now, from my standpoint, but if the government says, because such is the trend set by the BCCI in India as well, our government doesn't allow us to do anything. So the government in Pakistan has also said this. So this non-cricketing discourse is eventually going to harm the game of cricket. Now I see a lot of my friends, many friends in India, they keep saying that Pakistan cricket will be doomed, there will be sanctions, this and that.
I know the power of purse is really paramount. I understand this, but cricket should be treated like cricket by Pakistan, India, Bangladesh, because one day, somewhere down the line, maybe in a couple of years, those Goras, the Australians, and the Britishers are going to take the ICC back into their own hands. Mind you on this one. बिल्कुल। अच्छा, हमें रामेश भाई भी जॉइन किया है। रामेश, वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक-ठाक, आप बताएँ? मैं यार बस ठीक, आप बताओ? ठीक-ठाक। रामेश भाई, मैं आपसे पूछना था कि आपकी क्या राय है फिर आगे बॉयकॉट हो रहा है और आपको लगता है क्या प्लेइंग मैं आपसे पहले पूछूँगा आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 जो होनी चाहिए वर्ल्ड कप की गेम्स में और फिर मैं शाम भाई से पूछूँगा। अच्छा, बॉयकॉट की ये देखो, बॉयकॉट है नहीं है। पहले है। तो आपको ना वर्डिंग समझना है। जी, जी। बॉयकॉट नहीं है, इट कि पाकिस्तान टीम हैज़ डिसाइडेड नॉट टू टेक फील्ड ऑन 15th। अब इस क्योंकि क्लैरिटी की ज़रूरत है ना, आईसीसी के साथ जो आपके इश्यूज़ इस वक़्त चल रहे हैं एंड आईसीसी जो इतनी पॉल्यूट हुई हुई है इस वक़्त गेम को लेके, आई थिंक ये एक ठीक डिसीजन है और हिस्ट्री विल रिमेंबर कि मोहसिन नकवी आप पॉलिसी से आप डिसएग्रीमेंट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्रीमेंट कर सकते हो, बट यार बुली के अगेंस्ट खड़े होना, स्टैंड करना, ठीक है? जो इस वक़्त सिचुएशन है, आप देखो ना एक चीज़ यार, आई वाज़ कवरिंग द होल चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पे स्टेडियम्स बन रहे थे, आई मेड द होल वीडियो, होल कंटेंट, नॉट जस्ट मी, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सब ने किया यार, बट एट द एंड इंडिया ने क्या किया? दे डिसाइडेड नॉट टू कम, ठीक है? चलो पाकिस्तान ने ऑन द फेवर के ये कर, बट जब थर्ड पार्टी बांग्लादेश के साथ ये सब हुआ, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 25 मिलियन कुछ है, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड 250 मिलियन बड़ी, सॉरी 25 करोड़। हाँ, 25 करोड़ की जी ऑडियंस है और यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, वहां पे अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, 2011 का वर्ल्ड कप हमने देखा, 2014 का टी20 वर्ल्ड कप, 2031 का 50 ओवर वर्ल्ड कप में वो को होस्ट करेंगे विद इंडिया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, समवन हैज टू टेक द स्टैंड। आपको ऐसे नहीं चीजें करनी पड़ती यार ड्यूरिंग द, ठीक है आप बहुत लोग इस पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार those guys want to have a boycott, वो कहते हैं जी हम बॉयकॉट करें, अब इवेंचुअली हमने कर दी है, सो दे आर लाइक वो उस वक्त सिचुएशन में यार इन्होंने कैसे कर दी है, लाइक इस वक्त ये सिचुएशन है। और आप अगर इंडियन मीडिया देखो, उनके डिफरेंट जो एंकर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो तो ये कह रहे हैं यार वर्ल्ड कप ही खत्म कर दो, ये कर दो, पाकिस्तान को सैंक्शंस लगा दो। कैसे सैंक्शंस लगा सकते हो? 1996 ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने मना किया, दे वोंट ट्रैवल टू श्रीलंका, वहां पे वो टेरर टैक्स होते तमिल टाइगर्स और वो सारा चल रहा था। 2003 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने मना किया जी, दे वोंट ट्रैवल टू कीनिया। दो उस सेम वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने मना किया, दे वोंट ट्रैवल टू जिम्बाब्वे। 2009 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे डिसाइडेड नॉट टू ट्रैवल इंग्लैंड क्योंकि कुछ सर्टेन प्लेयर्स को वीजास नहीं दिए गए। इवेंचुअली क्या हुआ, आईसीसी ने बड़े तरीके से, बड़े कामली उस चीज को हैंडल किया। इवन यार आप एक चीज देखो, उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ भी ये था कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था पाकिस्तान से भी चला गया था, जो आपके मुल्क में अटैक हुआ, बट क्या हुआ, आईसीसी ने आपका आपका केस प्लीड हुआ, आपका केस लड़ा गया और आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी मिली, विच वाज अ विन। अब क्या हुआ है देखो, जैसे ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ट्वीटेड, उसके कुछ लाइक फ्यू आवर्स बाद ही आईसीसी की मेल आई है, आईसीसी ने मीडिया रिलीज जारी की है कि यार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और नीचे एक एंड पे माफी का भी लिख दे कि यार इस चीज को प्लीज कंसिडर करो। मतलब आप बदमाशी भी दिखा रहे हो, फिर आप आगे से कह रहे हो यार मेरा भाई नहीं, बात को समझो। पॉइंट इज कि यार ये पूरी चीज अब पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है, अब बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है एज फार एज आई नो। रावल इस्लामाबाद में और न्यू दिल्ली में लोग आपस में लगे हुए हैं बात करने के, जी इस चीज को सॉर्ट किया जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, थैंक यू रामेश भाई। जी, निशा भाई आपसे राइवल भाई कमेंट आया कि PCB's held belt on his stand for so-called injustice against Bangladesh. Why are they not giving any formal explanation to ICC rather than hiding behind the government directive? First of all, we report to the government. We don't report to the ICC. We are an equal partner, equal member. We are one of the top-notch test nations with World Cups of every category. So we don't owe an explanation to ICC unless and until ICC stops being a sidekick of BCCI. This hegemonic attitude will not be tolerated. To be very honest to you. एंड जहां तक बात है कि आईसीसी को हमने बॉयकॉट किया और हमने क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, हमने बता दिया कि पीसीबी ने कहा है कि हमें कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, जिस तरह बीसीसीआई को उनकी गवर्नमेंट मना कर देती है, अमित शाह कंपनी मना कर देते हैं, यहाँ पर शहबाज शरीफ कंपनी ने मना कर दी है। ट्रेंड तो आपने डाला था, लॉस तो गेम को आपके साथ स्टार्ट हुआ, तो अब क्या कर सकते थे हम? इट वाज एज गुड एज इट इज।
या अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, आपसे पहले पूछूंगा दिशा भाई, फिर राहुल भाई, मेरे को लगता है की प्लेयर्स कौन से होंगे पाकिस्तान में for the World Cup. I would say my key players would be like Abrar, Saim, and Shadab. So what are your key players, Dishami? It has sorry, it has to be a Sam Ayub up in the order, and then I, I do not know because I don't expect much, to be very honest with you. The closely I've noticed these kids playing, a lot is yet to be decided from them once the pressure is on. So I can't put my money on a half fit Shaheen Shah Afridi. And Naseem Shah is being pushed out of the team every time he gets into rhythm. So if there is an Abrar or a Sami Ayub, I don't see anything because you don't have a middle order at all. And yes, it was a very big achievement by Pakistan, thrashing Australia 3-0. It's not a normal thing. But then again, it was a bilateral series, great series. International matches are a different ballgame. So I don't see anyone. Yes, there might be odd brilliances, and I wish and hope they do, but not much that I could say about. You don't Thank follow you. the process, Yeah, and then you make it to the team. So, I mean, that is all I can say about them. yeah, for sure. Thank you, Dishami. जी रामत भाई, आपके क्या की प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप के लिए आपके हिसाब से? यार फॉर मी साइम तो ऑब्वियसली है। साइम गिवन द कंडीशंस जो आपको मिलेंगी कोलंबो में, क्योंकि आपने दो ग्राउंड्स में खेलना है, एससीसी में खेलना है और फिर मुदासा में खेलना है। उस उन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए साइम, फरहान ठीक है, लोग कह रहे हैं कि उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी और उसको 2 मैच से बाद ड्रॉप किया, बट श्रीलंका में आई थिंक ही कैन डू बेटर, क्योंकि वह कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने, कन्वेंशनल स्ट्राइक रेट के साथ कन्वेंशनल क्रिकेट, मतलब वो स्वीप्स रैम्स करने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब सलमान अली आगा तो फॉर श्योर, सलमान अली आगा तो इस वक्त नंबर 3 पे, जितना उसने अपने क्रिटिक्स को चुप करवाया, द वे ही परफॉर्म वाज वेरी वेरी गुड। हाँ, अब आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है ना यार, देखो नंबर जो आगे मिडिल ऑर्डर में आयदर फखर और बाबर, आप दोनों को नहीं कर सकते। आयदर फखर और बाबर आजम, ये इनमें से एक Yeah, खेल सकता है। एंड आई थिंक आपका शादाब तो ऑब्वियसली करेगा। शादाब इस वक्त, मैं अली आपकी स्पेसेस में भी मैंने कहा था, या मैंने पहले भी एक दफा जगह बात की थी, फिट शादाब इज द बेस्ट प्लेयर वी हैव इन पाकिस्तान साइड। यार जब वो फिट है, ही कैन डू वंडर्स। आई थिंक 2022 वर्ल्ड कप, जो आपका T20 वर्ल्ड कप था इन ऑस्ट्रेलिया, ही वाज द लास्ट टाइम आई सॉ सुपर फिट। और उसके बाद वो अब नजर आ रहा है, जहां उसका बैट से भी रन आ रहे हैं, विकेट्स भी ले रहा है। मोहम्मद नवाज की जो इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। सो यार बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट आई थिंक आपका जो स्पिनर अटैक है वो बहुत सॉर्टेड है। और इस वक्त देखो द वे जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, बहुत लोग कह रहे हैं सी साइड है, डी साइड है, डिप्लीटेड है। यार उनका मेन स्क्वाड है। अब इवन देखो उस स्क्वाड में से भी उन्होंने उसमें से पैट कमिंस बाहर हो गया, पैट कमिंस वाजंट फिट। अब उनका यही स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप में जाना है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मैक्सवेल और टिम डेविड आने के, टिम डेविड और मैक्सवेल भी आते, उनसे भी नहीं कुछ होना था। द वे पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग लाइक फॉर 6 मंथ्स, मैंने बड़ा एक ऑब्जर्व की चीज कि रावलपिंडी और लाहौर में ना यूजुअली बेल्टर ऑफ रन आते थे, पिच फ्लैट होती थी। बट पिंडी में भी और लाहौर में भी, जो आपने रिसेंट अभी T20 के लिए पिचेस चेंज की गई हैं, पिचेस को स्पिन फ्रेंडली थोड़ा सा किया है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के लिए तैयार होना है। अब एक चीज आपने देखी, आफ्टर फर्स्ट 10 ओवर्स, फर्स्ट इनिंग्स के पिच गेटिंग स्लोअर, स्पिन ज्यादा होने लग गया। और सेकेंडली उसमें आप एडम जैम्पा ने बहुत अच्छा बॉल किया, बट द वे दी पाकिस्तान टीम प्लेड अगेंस्ट कनमैन को बहुत एक्सपेक्ट करता कि वो अच्छा करेगा, बट उसने नहीं किया, क्योंकि जैम्पा से आप एक्सपेक्ट करते हो। सो यार ठीक है, पाकिस्तान टीम आई थिंक कर जाएगी कुछ ना कुछ। जी Disha भाई, मजा comment आया. What do you guys think at the end of the World Cup when the under two comes? Will Akshay Khanna be in there or not? Pardon? मजे का I'm comment sorry, आया I कि didn't get you. yeah, comment आया. What do you guys think at the end of this World Cup when the under two comes? Will Akshay Khanna be there in it or not in the second part? What has this got to do with cricket? My simple answer to this one is, I mean, Yeah, we're not passing through the best times in our history as far as yeah, these Bollywood style films are concerned. Talk of reality, yeah, get out of the movies. Honestly speaking, please get yeah, out of this Bollywood, the genre of Bollywood. I think Bollywood is failing. That's the reason they need such films. And South is actually excelling on all these things.
But talk Yeah. real, talk cricket. Yeah. I'm no अच्छा movie मैं expert. yeah. Hypothetically speaking, if ICC does approve sanctions, impose sanctions against PCB, what realistic options do they have with regards to challenging ICC decision, given lack of support from other boards? Yeah. जी जी समझ कर क्या रहा है इस पे देखो भाई, आप PSL से बनाते हो समवेयर क्लोज टू 30 मिलियन के करीब आप बना लेते हो, और PSL के अलावा इफ यू, उसमें इशू पता क्या है, आपकी जो स्टार वैल्यू होती है ना, इट इट कैरीज द वेट ऑफ द बोर्ड. प्लेयर्स आर द टॉप थिंग्स हु आर द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग. आपका बिजनेस के सारा जो मॉडल है वो उस पर डिपेंड करता है. मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने वो टाइम नहीं देखा, मैंने भी वो टाइम नहीं देखा. आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माय डैड, फ्रॉम माय अंकल्स. कैरी पैकर की सीरीज थी लेट 70s से ना अर्ली 80s से चलती रही थी, which revolutionized cricket. It was not backed by a certain country. It was also a league cricket matches, day night matches होते थे उस पर. साउथ अफ्रीका 21-22 साल इंटरनेशनल्स पे रहा है, सैंक्शंस पे रहा है अपार्थाइड की वजह से. दे स्टिल थ्राइव्ड. 92 वर्ल्ड कप में कबूम टफ सेमीफाइनल में गए, डीएल की वजह से जो है ना इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हारे थे. सो क्रिकेट इज कैन नॉट बी स्टॉप्ड. देयर आर ओनली genuinely 8 test playing nations in the world. Cricket is not a normal sport. So if somebody thinks that sanctions this and that, I tell you this thing: you take the bully head on and the bully backs off. ICC has to back off. If they put sanctions on Pakistan right now, I tell you this thing: it will just be like a normal story where you're 4 bandits, and they once they make that loot, and then they fall apart and they start shooting each other. In Big Three को इकट्ठे होने दो, जैसे Big Three आ जाएंगे ना, इनकी galvanizing force पाकिस्तान है. पाकिस्तान हटता है ना, the fourth one, and then I see how they survive. ICC will stop existing. ये क्रिकेट बोर्ड्स इंडिविजुअली अपना NBA स्टाइल के मैचेस कराया करेंगे. NFL जिस तरह अमेरिका में होती है, तो इस तरह की क्रिकेट रह जाएगी. मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्रिकेट का इंटरनेशनल एंगल वैसे ही खत्म हो चुका है. यंग रिटायरमेंट्स हो रही हैं. क्रिकेट में से ये वाला स्टिंग भी निकाल लेंगे ना पाकिस्तान वाला, कि हम बहुत बड़ी चीज हैं. तो जाएं अपने 3 घंटे की मूवी देखें और उसमें एंजॉय करें कि इसमें सारे आपके हीरो अच्छे तरीके से रहते हैं और हीरोइन बड़ी खुश रहती है. पाकिस्तान, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान का अपना जो भी काम रहा है आइडियल रहा हुआ है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर इस तरह की चीज करेंगे तो आई थिंक, मैं कहना नहीं चाहता था, हम बांग्लादेश नहीं है, हम पाकिस्तान है. एंड हर कंट्री की अपनी इक्वल रिस्पेक्ट होती है, छोटे जिम्मेदार की, बड़े की भी. आपको बड़ा होने के नाते मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए. अगर आप नहीं दिखाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी. दैट इज ऑल आई कैन से अबाउट इट. बिल्कुल. अच्छा मैं से दिशा भाई राम से पूछा था, दिशा भाई आपको पता है पिचेस कैसी होंगी यहाँ पे, स्लो ट्रैक्स होंगे श्रीलंका में, अगर बारिश हुई तो आपको लगता है टारगेट कुड बी 200? देखिए, पार स्कोर तो बिल्कुल रमेश भाई ने कहा है, ऐसे ही है. वहां पर आपको स्ट्रेट बैट से खेलना है, वी में खेलना है. पिच आपको इतना पेश नहीं देती कि आप रैम शॉट्स लगा रहे हो, रिवर्स स्वीप्स मार रहे हो. बट जिनको कीड़ा होता है रिवर्स स्वीप्स खेलने का, वो खेलेंगे, जिनकी नेशनल गेम ऐसी है. लेकिन दे विल स्ट्रगल बिकॉज बॉल पूरा कैरी नहीं होगी, आप थ्रू द लाइन हिट नहीं कर सकेंगे, आप स्क्वायर पे नहीं मार सकेंगे, बॉल बल्ले पे आएगी नहीं. बल्ले पे आएगी नहीं तो पीछे की शॉट आपकी लिमिटाइज हो जाती हैं. ओनली ऑप्शन इज टू प्ले इन द वी. और बड़े कम लोग हैं जो वी में सही खेलते हैं. इवन चाहे आप वी में भी खेलना है, आप छक्का भी मारेंगे तो वी में मारेंगे. हर बल्ला काउस कॉर्नर पिक करने की कोशिश करेगा और बहुत सारे कैचेस निकलेंगे. तो यहाँ पर आपको जो है ना अपनी गेम को बड़ा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा. स्पिन ट्रैक्स पाकिस्तान में जो है, जैसे भी ये इस मैच में हमने टेस्ट नेशन सीरीज में किया है, सॉरी ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, दिस इज हाउ द कंडीशन विल बी. लेकिन वेदर विल बी अ लॉट डिफरेंट. ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेदर वहां पर होता है, तो वेदर इज गोइंग टू बी अ टफ आस्क. बिकॉज यहाँ आप एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से जब ट्रांजिट करेंगे ना उधर, तो इट विल बी एन इशू फॉर द प्लेयर्स. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं से पूछा था कि दिशा भाई के आप बात बिल्कुल ठीक है इस रिगार्ड में. आपको लगता है कि हमारे बैटर्स आर गोना बी ओके प्लेइंग दोस कंडीशंस? लाइक यू थिंक दे विल बी एडजस्ट टू I द can't. कंडीशंस? I absolutely can't put money on the batters because I have never had good experience, putting the money on the batters, and they've hardly delivered. And so can be said about the bowlers as well. Yes, we need to be very happy about the recent victories against South Africa and Australia in the home conditions. But that's how it is. International matches or ICC matches are different. Once the trophy starts, another person kicks in and the players start performing who are big match players. हमारे big match players ज्यादा है नहीं यार अली, मसला ये है. Big match players हैं नहीं. बाबर आजम है but I don't think he's a big match player. Definitely not. Not a big match Uh, player. वही ना. अच्छा, comment है Mohsin Naqvi also being the interior minister of Pakistan
Is it why the ICC or rather BCCI had been rather too careful as far as negotiations with PCB are concerned? मैं आपको एक बात बताता हूँ. It's a very pertinent question, but the way Jay Shah, that kid, 37 years old kid, is heading ICC. His dad is what? Interior Minister. But his dad is a politician. Mohsen Naqvi is not a politician; he's a technocrat. So he does not need the votes to get his work done. He is the guy who is hell bent on doing only one thing: quid pro quo. You scratch my back, I'll scratch yours. That is his mantra. So it's not him being the interior minister. It's of no consequence to the other people. But the board that he represents, he is such kind of a guy. He's a hard nut to crack. So if he says that I'm not going to back off, he won't back off because he doesn't have to please an audience. He is a doer and he will do it. And I like such people at such slots who are not afraid of a public sentiment. He should make a decision that is in the larger context of the game for the betterment. आप सबको एक चीज बुरी लग रही है पाकिस्तान जो कर रहा है फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट. इंडिया में 1.5 अरब लोगों में से 1 अरब 40 करोड़ एक्सीलेंट लोग होंगे. पाकिस्तान में 25 करोड़ में से 25.5 करोड़ के 25 करोड़ 80 लाख लोग एक्सीलेंट होंगे. हॉक्स हर जगह पाए जाते हैं, वो बांग्लादेश में पाए जाते होंगे. क्या हम इन हॉक्स की वजह से अपने क्रिकेट में अपनी अपनी इस एटीट्यूड को बना के कि हम क्रिकेट को बहुत अच्छा जानते हैं, बड़े पैसे देते हैं, खत्म कर देंगे? Point is not about Mohsen Naqvi. It's just that the only chairman who happens to have had shown the bone, जिसने अपनी बोन दिखाई है, उसने एसीसी का प्रेसिडेंट होने के नाते कहा है मुझसे अवार्ड नहीं लोगे, ट्रॉफी नहीं मिलेगी. तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तुम्हारी टीम आएगी तब ट्रॉफी मिलेगी. सो ऐसी चीज हमारे पिछले चेयरमैन नहीं करते रहे. ऑल द ऑनरेबल चेयरमैन हिज प्रेडिसेसर्स हैवंट बीन डूइंग दिस. अगर अल्लाह बख्श शहरियार खान साहब ने अपना हाथ दिखा दिया होता उस टाइम पे, तो इंडिया आज तक इस तरह ना कर रहा होता. देखिए, इंडिया के साथ कोई चीज करना मसला नहीं है, बट एज एन इक्वल ऑन द इक्वल टर्म आप बात करें. क्रिकेट में कभी हम भी ऊपर थे, अभी वो ऊपर है. लेट्स गिव इट टू देम विद देयर एक्सीलेंट क्रिकेटिंग नेशन. बट इसका मतलब क्या है कि आप सबको बुलडोज कर देंगे? ये कहाँ चले गए इनके स्टैंडर्ड्स ऑफ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑफ दोस ऑस्ट्रेलियंस एंड द ब्रिटिशर्स, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीकans? All of these boards minus India are conspiring against India to take all the powers away from India, switch the headquarters back to London, आईसीसी का, जहां से वापस जगमोहन दालमिया पाकिस्तान की सपोर्ट से और एशियन ब्लॉक बना के लेके आया था. अब आप बताइए, आईसीसी में एशियन ब्लॉक का मजाक नहीं बन के रह जाएगा? द मोमेंट इंडिया इज बाय इटसेल्फ, अफगानिस्तान मैटर्स नथिंग. हालांकि देयर ऑनरेबल कंट्री, देयर ऑनरेबल बोर्ड, उनका भी उतना ही वोट है. बट क्या होता है, कितने मैचेस मिल गए अफगानिस्तान को इंडिया में खेलने के लिए? वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट करता है. कितने प्लेयर्स को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए? कितनों को मिल गए कॉन्ट्रैक्ट्स? सो ये चीजें आपको देखनी चाहिए. तो अगर इंडिया का मूड है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अपनी सारी चीजों को चलाने का, तो चला लें. जिस टाइम पे घोरों का मौका मिलेगा, आपको आपकी जगह पे रहने नहीं देंगे वो. मैं आपको ये बात बता दूं. Comment tag is, sir, the real problem is the moment I switch to any of our so-called Indian cricket experts, their claims seem rather too cinematic, rather realistic, and thus the confusion. Alright, इनके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ. Switch on to Wire, The Wire. It's an Indian channel, program done by Karan Thapar. There's a journalist, a very academic kind of a journalist, Shraddha. There was an interview of Shraddha vis-a-vis all this fiasco that has happened as far as Bangladesh episode is concerned, and supposed Pakistan's boycott. It was then thought in India that Pakistan might not boycott from the World Cup as such. So Pakistan didn't disappoint them, and their view of Shraddha as well as Karan Thapar's view was that Indian government is using BCCI as its political arm, using cricket as a political tool. People in their own country have been saying this, and there's a large population base that is making such claims. It has got nothing to do with anything but the academics in India. They're all thinking BCCI isn't doing justice to the game of cricket by creating its clout and then repressing countries by its influence, which is what? Onion cricket. So this is what it is. अच्छा, मैंने पूछा था कि आपको लगता है कितना टाइम लगेगा वैसे अवनाश की अच्छा कितना टाइम लगेगा like Sameem and Haas को like to like be in Pakistan's like one day team or T20? 3 more years. 3 more years. Okay, and आप एक और क्वेश्चन था कि जिस पे वो अब्दुल्ला शफीक को सारे किताबी प्लेयर कहते हैं, आपने देखा होगा पीएसएल में अच्छी पावर हिटिंग की है, तो आपको पता है किताबी प्लेयर जो है अब्दुल्ला शफीक, उसको क्या हुआ है? व्हाट्स हिज मेन कंसर्न विद हिज बैटिंग? Lack of form, lack of application.
If you can give me 2 minutes, I'll be back in 2 minutes. You can give me 2 minutes, right? Okay. Yeah, तो अब्दुल्ला शफीक के बारे में मैं सवाल करूंगा. आप आते हैं वापस हमें ज्वाइन भी करते हैं वो. But yeah, lack of form भी है उसकी. से I mean खेला गया, उसको चांस मतलब दिया नहीं है प्रॉपर. So obviously he's not really doing that well. So yeah, चांस मौका देते नहीं है यार. मौका देंगे. I don't know if शफीक दोबारा आएगा सिस्टम में हमारे. डिपेंड करता है. हमें एक और हमें रामेश भाई ने ज्वाइन किया. मैं शायद मेरे एक और फ्रेंड शायद हमें ज्वाइन कर ले अभी. मैं 1 सेकंड से पूछता हूँ आप लोग. 1 सेकंड हो गए. जी जिशान भाई, तो आपको लगता है लैक ऑफ फॉर्म का मसला है उसका अब्दुल्ला शफीक? Form ka masla hai, he was not given, he didn't perform well. He was given a lot of chances by Miss Bollock. He was picked up by Miss Bollock for Islamabad United based on his hitting prowess, but then he couldn't capitalize on that. He's a classic hitter, good hitter. Again, short in form and short of participation in the first class matches. Domestic, you don't play competitive cricket, no matter how many camps you attend. It doesn't give you the same feeling as of a competitive cricket match. Asha, Ali, I have to go now. We have a program at 4 with the Tauriman. So if you can just allow me to leave now, because I have to make some setups for that. Thank you, Zishan bhai, for joining. बहुत enjoy No problem. आपसे बात करके और बहुत मजा आया. Likewise. I learned a lot, and I'll always be looking forward to learn a lot of cricket knowledge from you. Thank you, Zishan bhai. Thank you. Sure. Thank you very much. Likewise. Take care. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.